Hello guys, welcome to Impulsive Zone. This is Brahmajit. So today we'll be talking about CSE rank versus percentile cutoffs for top 10 NITs of India for categories OBC and EWS. I have already uploaded the rank versus percentile cutoffs for top 10 NITs of India for general candidates, which is your CRL rank. So today we'll be talking about OBC and EWS candidates. Okay, so before going into the video, do subscribe to our channel and also hit the bell icon so that notification reaches you first. So let's start. तो यार देखो, मैंने यहाँ NIT नेम, उसकी CSE की कट ऑफ OBC के लिए, अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल, एंड इफ़ IT भी अगर पढ़ाया जाता है उस कॉलेज में तो IT की कट ऑफ, IT की परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेट, then CSE cutoff for EWS, approximate percentile for CSE for EWS, then IT cutoff for EWS, and then percentile, approximate percentile for EWS. The most important thing which you should note here is that these are category ranks, not CRL ranks. So don't get confused with category and CRL. Don't get confused with the cutoff of this one with the general cutoff. Okay, the general cutoffs have been already uploaded in this channel, so do watch it. सब कुछ यार ये कैटेगरी का ही रैंक है, कोई भी ऐसा रैंक नहीं है जो जनरल का हो. ये रैंक है तो ये CSE सिर्फ OBC का रैंक है, इस कॉलम में सिर्फ OBC रैंक्स हैं, यहाँ सिर्फ EWS के रैंक्स हैं. ओके, और अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल जो है वो जनरल कैटेगरी का परसेंटाइल है. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस OBC कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट के रैंक को मैंने जनरल दैट इज़ CRL रैंक में कन्वर्ट किया. उस CRL रैंक से मैंने अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल को एक्सट्रैक्ट किया है. दिस अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल प्लस माइनस 0.1 हो सकता है. ओके, तो यार अप्रॉक्सीमेट है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं है, बट यार मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेशन पे प्लस माइनस 0.1 ही आगे पीछे हो सकता है इस परसेंटाइल से. ओके, तो मैंने मोस्ट एक्यूरेट देने का कोशिश किया है. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट कॉलेज इज़ NIT त्रिची, जो सबसे टॉप कॉलेज है इंडिया का. फॉर गेटिंग इट यू नीड 242 ऑल इंडिया रैंक इन OBC and approximate percentile for getting it is 99.907, and for getting CSE in this college, and if you are EWS candidate then minimum rank required, EWS rank required is 153, and approximate percentile corresponding to it is 99.88 percentile in general CRL. Okay, and our next college is, that is second one, it is NIT Rourkela. For getting it, minimum of 819 all India rank is required in OBC category, and percentile corresponding to it in the CRL rank will be 99.68 percentile. Okay, 819 OBC rank converted to CRL rank, then percentile from that CRL rank is extracted, which is your 99.68. Hope you understood it. Okay, and similarly for EWS you need 590 all India rank in EWS category, 590 EWS rank, and percentile corresponding to that will be 99.55 percentile CRL. Our third college is NIT Surathkal. For getting it you need all India OBC rank of 448, and percentile corresponding to its CRL rank is 99.82. For getting CSE, and if you are a EWS candidate then you need 212 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to its CRL rank will be 99.83. and for getting the fourth college, that is your NIT Warangal, you need all India rank of 594 in OBC category, and percentile corresponding to it is 99.77. and if you are from EWS category you need to score minimum of 236 all India rank in EWS category, 236 EWS rank, and percentile corresponding to it will be 99.82. Okay, fifth college is your NIT Calicut.
And for getting CSE in NIT Calicut, you need minimum of 1095 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to its CRL rank is 99.58. And for getting CSE and you are EWS candidate, you need 627 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to it will be 99.52. And our sixth college is NIT Kurukshetra. In NIT Kurukshetra, CSE as well as IT both are taught, so I have mentioned the rank and percentile of both the branches. Okay, so for getting NIT Kurukshetra, you need minimum of 2273 all India OBC rank, and percentile corresponding to its CRL rank is 99.13. And if you want to take IT in Kurukshetra and you are OBC candidate, you need minimum of 2703 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to its general rank, that is CRL rank, is 98.97. And if you are from EWS category and you want CSE in that college, you need minimum of 913 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to its CRL rank is 99.30. And if you want IT in the college and you are from EWS category, you need minimum of 1119 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to it will be 99.14. Okay, and our next college is MNNIT Allahabad. For getting MNNIT Allahabad, that is your NIT Allahabad, also called Motilal National Institute of Technology Allahabad, both are same things. Okay, so getting CSE in that college, you need minimum of 1097 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to its CRL rank is 99.58. And if you want IT in that college, you need a minimum of 1683 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to its CRL rank is 99.35. And for getting CSE, and if you are from EWS category, you need a minimum of 534 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to it will be, its CRL rank will be 99.59. Okay, and if you are from EWS category and you want IT in this college, then you need minimum of 763 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to it will be 99.41. Okay, so our next college is, that is 8th college, is VNIT Nagpur, also called NIT Nagpur. V stands for Vishvesvaraya. Okay, for getting CSE in that college, you need a minimum of 1500 all India rank in OBC category, and 99.42 percentile, which corresponds to CRL rank of the corresponding OBC rank. Okay, and if you are from EWS category, then you need a minimum of 803 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to it will be 99.38. Okay, moving to next college, which is 9th one. For getting NIT Durgapur, you need a minimum of 2691 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to it will be, which is percentile corresponding to CRL rank, will be 98.97. Okay, and if you are from EWS category, you need 1376 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to its CRL rank will be 98.95. And our 10th college is NIT Silchar, located at Assam. For getting NIT Silchar, you need minimum of 3934 all India rank in OBC category, and percentile corresponding to its general CRL category will be 98.50. And for getting CSE in that college and you are EWS candidate, you are from EWS candidate, you need a minimum of 1828 all India rank in EWS category, and percentile corresponding to it will be 98.60. तो यार जो भी मैंने परसेंटाइल बताया, तुम्हें कट ऑफ बताया, तो ये सभी यार 6th राउंड के ही कट ऑफ्स हैं. तो यार ये चीज़ जान लो, फर्स्ट सेकंड के नहीं, ये 6th राउंड दैट इज़ लास्ट राउंड के कट ऑफ हैं. ये मैटर कर सकता है यार ईयर टू ईयर. कुछ साल पहले तक यार 7th राउंड तक होती थी काउंसलिंग, बट लास्ट ईयर जोसा वालों ने सिर्फ 6th राउंड तक इसे लिमिट कर दिया, इसीलिए 6 राउंड तक ही काउंसलिंग होती हैं. लास्ट ईयर 6th राउंड की हुई थी. तो यार लास्ट राउंड इज़ 6th राउंड, जिसका मैंने तुम्हें कट ऑफ और परसेंटाइल बताया, जो लास्ट रैंक या लास्ट परसेंटाइल पे मोर पर्टिकुलरली यार मोर एक्यूरेटली जो मुझे बात करनी चाहिए, कट ऑफ रैंक पे ही बात करनी चाहिए, बिकॉज रैंक इज़ द मोस्ट एक्यूरेट थिंग, बिकॉज यही चीज़ था जो
ये एग्जैक्ट रैंक है यार जो भी मैंने मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो यही रैंक पे एडमिशन हुई थी, तो ये लास्ट रैंक है। ओके, 6th राउंड की लास्ट रैंक। सीसैप को मैंने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि सीसैप यार वो लक पे डिपेंड होता है। सीसैप तब बच्चे डालते हैं जब 6th राउंड में भी उन्हें वो कॉलेज नहीं मिलता है, और जो कॉलेज छोड़ देते हैं बच्चे उनके वजह से वैकेंट जो सीट होता है वो मिलता है। तो यार कुछ पता नहीं है इसका एग्जैक्ट कि कितना ही रैंक पे बच्चों को एग्जैक्टली वो कॉलेज मिल जाएगा। तो सीसैप is purely dependent upon your fortune or you say luck. So this was our cutoff of top 10 NITs based upon its category rank. So hopefully you like the video. यार बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, so do hit the like button and if you found the video informative, and also comment down if you have any doubt, और यार कम से कम एक थम्स अप ही डाल देना कमेंट सेक्शन में, वो एक मोटिवेशन देता है मोर वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो मीट यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन बाय।